Today I will discuss one lecture of Supreme Court. In the Supreme Court of Pakistan, Appellate Jurisdiction, present, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, Mr. Justice Jamal Khan Mandokhail, Mr. Justice Athar Minallah. Civil Petition No. 181 of 2024. Against the order of Lahore High Court, Lahore, dated the 13th of January 2024, passed in Writ Petition No.2433 2024, Parvez Elahi, Petitioner versus Election Commission of Pakistan, etc. Respondents for the petitioners: Mr. Faisal Siddiqui, ASC. Barrister Haris Azmat, ASC. Mr. Aamir Saeed, ASC. Sardar Abdur Raziq, ASC, assisted by C.H. Muhammad Ali, ADV, C.H. Akhtar Ali, AOR. For the ECP, Mr. Muhammad Arshad, DG, Law. Mr. Masood Akhtar, DG, Finance. Mr. Khurram Shahzad, ADG, Law. Falak Sher, Consultant Law. For Respondent No. 4, Hafiz Ahsan Ahmed, ASC. A.W. Respondent No. 4 in person. Date of hearing, the 26th of January 2024. Judgment: Syed Mansoor Ali Shah, J. At the heart of a thriving democracy lies the fundamental process of elections. An embodiment of the democratic principle that power should be vested in the hands of the people. And at its core, democracy is all about participation. Elections offer a structured and equitable way for citizens to participate in the democratic process and express their preferences for leaders and policies. The legitimacy of a democratic government hinges on its reflection of the people's will. And this is only possible through widespread and inclusive participation of the candidates and voters in the election process. Pro-enfranchisement policies ensure that every eligible citizen, irrespective of his or her background, has the. Now I will discuss in Urdu. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील का दायरा इख्तियार मौजूदा मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, मिस्टर जस्टिस अथर मिनल्लाह। सिविल पिटीशन नंबर 181 ऑफ 2024। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ लाहौर मोरखा 13 जनवरी 2024। रिट पिटीशन नंबर 2433/2024 में मंजूर। परवेज इलाही, दरखास्त गुजार बमुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह। जवाब दहिंदगान दरखास्त गुजारों के लिए जनाब फैसल सिद्दीकी अश्क, बैरिस्टर हारिस अजमत ASC, जनाब आमिर सईद ASC, सरदार अब्दुर राजिक ASC, मुआविन चौधरी मोहम्मद अली, एडवोकेट चौधरी अख्तर अली AOR। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जनाब मोहम्मद अरशद, डिप्टी जनरल कानून, जनाब मसूद अख्तर, डिप्टी जनरल फाइनेंस, जनाब खुर्रम शहजाद डिप्टी जनरल कानून, फलक शेर, कंसल्टेंट लॉ। जवाब दहिंदा नंबर 4 के लिए हाफिज अहसन अहमद अश्क, जाती तौर पर जवाब दहिंदा नंबर 4। समाअत की तारीख 26 जनवरी 2024। फैसला: सैयद मंसूर अली शाह, जे। इंतखाबात का बुनियादी अमल, इसका एक औतार जमहूरी उसूल है कि इख्तिदार उनके हाथ में होना चाहिए। लोग और इसके मरकज में जमहूरियत सिर्फ शिरकत से मुताल्लिक है। इंतखाबात शहरियों को इसमें हिस्सा लेने का एक मुनज़्ज़म और मसावी तरीका पेश करता है। जमहूरी अमल और कायदीन के लिए अपनी तरजीहात का इजहार और पॉलिसियां जमहूरी हुकूमत की कानूनी हैसियत इस पर मुनहसर है। अवाम की मर्जी की अक्कासी, और ये सिर्फ उसके जरिए ही मुमकिन है। उम्मीदवारों और वोटर्स की वसी और जामा शिरकत इंतखाबी अमल, हक राय दही की हामी पॉलिसियां इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हर शहरी इसके पस मंजर से कत नजर इसके पास है। C.P. No.181 2024. 2. Opportunity to vote, thus reinforcing the democratic tenet of equal representation. The threat of disenfranchisement by way of an improper rejection of nomination papers looms large in a democracy, which may undermine the fairness and integrity of the electoral process. A democratic society committed to fairness must actively combat disenfranchisement, ensuring that all voices are heard and valued in the political arena. Inclusive electoral processes contribute to political stability and social cohesion. This stability is essential for the long-term prosperity and peace of any society. The vitality of elections in a democracy cannot, therefore, be overstated. Further, the right to vote freely for the candidate of one's choice is the essence of a democratic society.
and any undue restrictions on that right strike at the heart of representative government. 1. It is with this approach we deal with and decide upon the issues involved in the present case. 2. Briefly, the petitioner filed nomination paper for the seat of a member of the Punjab Provincial Assembly, MPA, from PP 32, Gujarat VI. Respondent number 4 submitted his objections against the candidature of the petitioner. On the 30th of December 2023, the returning officer, Roe, rejected the nomination paper of the petitioner. The appeal of the petitioner before the election tribunal failed. The petitioner then preferred a writ petition in the Lahore High Court, which was also dismissed by a full bench of the Lahore High Court through the impugned order dated the 13th of January 2024. Hence, this petition for leave to appeal. 3. The nomination paper of the petitioner has been rejected mainly on 2 grounds. That the petitioner did not maintain an exclusive account for the purpose of election expenses for every seat he proposed to contest under Section 60, 2, b, of the Elections Act, 2017, Act, and that he failed to mention an asset, i.e., 10 Mala land in Failure, Mandi Bahardhan, Punjab, in the statement of his assets to be accompanied with the nomination paper through Form B under Section 60, 2, d, of the Act. 4. We have heard the learned counsel for the parties and have gone through the provisions of the Act. It may be noted at the very outset that the right to contest election is a fundamental right. 1 Wesbury v. Sanders 376 U.S. 1, 1964. Now, translate in Urdu. CP नंबर 181/2024। 2 वोट देने का मौका, इस तरह बराबरी के जमहूरी उसूल को तक़वियत मिलती है। नुमाइंदगी एक के जरिए हक राय दही से महरूम होने का खतरा जमहूरियत में कागजात नामजदगी का नामनासिब तौर पर मुस्तरद होना बहुत ज्यादा होता है, जिससे इंतखाबी निज़ाम की शफ़ाफियत को नुकसान पहुंच सकता है। अमल एक जमहूरी मुआशरे को इंसाफ के लिए सरगर्म अमल होना चाहिए। हक राय दही से महरूमी का मुकाबला करे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम आवाजें सुनी जाएं और सियासी मैदान में काबिल कदर शमूलियती इंतखाबी अमल इसमें हिस्सा डालते हैं। सियासी इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी ये इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। किसी भी मुआशरे की देरपा खुशहाली और अमन इंतखाबात की जानकारी, इसलिए जमहूरियत में उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा सकता। मजीद का हक अपनी पसंद के उम्मीदवार को आजादाना तौर पर वोट देना इसका जौहर है। जमहूरी मुआशरा और इस हक हड़ताल पर कोई भी गैर जरूरी पाबंदियां नुमाइंदा हुकूमत का दिल एक उसी तर्ज अमल से हम है मौजूदा केस में शामिल मसाइल से निमटना और उन पर फैसला करना। 2. मुख्तसरा दरखास्त गुजार ने की सीट के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किया। PP -32 से रुकन पंजाब सूबाई असेंबली MPA गुजरात में जवाब दहिंदा नंबर 4 ने इसके खिलाफ अपना एतराज जुमा कराया। दरखास्त गुजार की उम्मीदवारी 30 दिसंबर 2023 को रिटर्निंग ऑफिसर रू ने दरखास्त गुजार के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया कि अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त गुजार नाकाम। दरखास्त गुजार फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन को तरजीह दी जो कि भी थी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने बरतरफ कर दिया। 13 जनवरी 2024 का हुक्म इम्तिनाई, लिहाजा ये दरखास्त रुख्सत की जाए। अपील 3 दरखास्त गुजार का कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया है, बुनियादी तौर पर 2 बुनियादों पर। की दरखास्त गुजार ने बरकरार नहीं रखा हर निशस्त के इंतखाबी अखराजात के मकसद के लिए खुसूसी अकाउंट। इन्होंने इलेक्शन एक्ट की दफा 60(2)(b) के तहत इलेक्शन लड़ने की तजवीज पेश की। 2017 एक्ट और की वो किसी असासे का जिक्र करने में नाकाम रहा, यानी 10 मुल्ला अपने बयान में फालिया मंडी बहाउद्दीन पंजाब में जमीन कागजात नामजदगी के साथ फॉर्म बी के जरिए असासे एक्ट की दफा 60(2)(d) के तहत। 4. हमने फरीकैन के लिए सीखे हुए वकील को सुना है। एक्ट की दफात से गुजर चुके हैं, इस पर नोट किया जा सकता है। बहुत शुरू में कि इलेक्शन लड़ने का हक बुनियादी हक है। एक वेस्बीरी बमुकाबला सेनेडर्स 376 USA 1964। Page number 3. CP No.181 2024. 3. Guaranteed by Article 17, 2, of the Constitution. 2. While the qualifications and disqualifications for a candidate to enter the electoral contest are laid down in Articles 62 and 63 of the Constitution. 3. Read with Section 232 of the Act. The right to contest election being a fundamental right.
The provisions in the Act including Section 60 thereof that curtail or in any manner affect this right are to be construed strictly and applied restrictively. Since the matter relates to Section 60, 2, B, and D, of the Act, the provisions thereof are reproduced here for ready reference. 60. Nomination for election. 1. 2. Every nomination shall be made by a separate nomination paper on Form A signed both by the proposer and the seconder and shall, on solemn affirmation made and signed by the candidate, be accompanied by A. declaration that before the date fixed for scrutiny of nomination papers he will open an exclusive account, or dedicate an existing account, with a scheduled bank for the purpose of election expenses, and has attached statement of the said bank account with the nomination paper, starting with entries of 7 days prior to the election schedule. C. And D. A statement of his assets and liabilities and of his spouse and dependent children as on the preceding 30th day of June on Form B. A bare reading of the above provisions shows that under Section 60, 2, B, a candidate is to submit a declaration that he has opened an exclusive account, or dedicated an existing account, in a scheduled bank for the purpose of election expenses. 5. As for the first ground of rejection of nomination paper, the contention of the respondents is that the exclusive bank account has to be for every seat the candidate is contesting for and as the petitioner is also contesting for other seats. But he has mentioned one and the same bank account for all his nomination papers filed for several seats. We are afraid the contention is misconceived. Our reading of the said provision is that the exclusivity of the required 2 Javed Jabbar versus Federation of Pakistan PLD 2003 South Carolina 955, Pakistan Muslim League, Q. V. Chief Executive of Islamic Republic of Pakistan PLD 2002 South Carolina 994, Nawaz Sharif versus President of Pakistan PLD 1993 South Carolina 473. 3. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. CP नंबर 181/2024 3 आइन के आर्टिकल 17(2) के जरिए जमानत दी गई है, जबकि दाखिले के लिए उम्मीदवार की अहलियत और नाअहल इंतखाबी मुकाबला आर्टिकल 62 और 63 में दर्ज है। आइन 3 एक्ट के सेक्शन 232 के साथ पढ़ा गया। मुकाबला करने का हक इलेक्शन एक बुनियादी हक है जिसमें एक्ट की दफात भी शामिल है। इसका सेक्शन 60 जो इस हक को कम करता है या किसी भी तरीके से इस हक को मुतासिर करता है, सख्ती से समझा जाए और पाबंदी से लागू किया जाए, क्योंकि मामला मुतालिका है। एक्ट की दफा 62, बी और डी तक इसकी दफात ये है। तैयार हवाला के लिए यहाँ दोबारा पेश किया गया। 60 इलेक्शन के लिए नामजदगी 1, 2 हर नामजदगी एक अलहदा कागजात नामजदगी के जरिया की जाएगी। फॉर्म ए जिस पर तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा दोनों के दस्तखत होंगे और जारी होंगे। पुख्ता इस्बात और उम्मीदवार की तरफ से दस्तखत किए गए, साथ रही बजरिया ए बी एक ऐलान जो कि नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए मुकर्रर करदा तारीख से पहले कागजात वो एक खुसूसी अकाउंट खोलेगा या मौजूदा वक्फ करेगा। इंतखाबी अखराजात के मकसद के लिए शेड्यूल बैंक में अकाउंट और उसके साथ मज़कूरा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मुंसलिक किया है। कागजात नामजदगी 7 दिन पहले के इंदराजात के साथ शुरू होता है। इंतखाबी शेड्यूल सी और डी इसके असासों और वाजिबात और इसकी शरीक हयात का बयान और फॉर्म पर जून के पिछले 30वें दिन के मुताबिक मुनहसिर बचेगी। मुंदरिजा बाला दफात का एक ननगा मुताला जाहिर करता है कि सेक्शन के तहत 62 बी एक उम्मीदवार को एक ऐलान जुमा कराना है कि उसने एक खोला है खुसूसी अकाउंट या एक मौजूदा अकाउंट को एक शेड्यूल में वक्फ किया गया है। इंतखाबी अखराजात के लिए बैंक 5 कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की पहली बुनियाद के तौर पर जवाब दहिंदगान का तनाज़ा ये है कि खुसूसी बैंक अकाउंट हर इस निशस्त के लिए होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहा है। दरखास्त गुजार दीगर निशस्तों के लिए भी इंतखाब लड़ रहा है, लेकिन उसने एक का जिक्र किया है और उनके तमाम कागजात नामजदगी के लिए एक ही बैंक अकाउंट कई निशस्तें। हम डरते हैं झगड़ा गलत समझा जाता है। हमारी मज़कूरा शब्द को पढ़ने का मतलब ये है कि जरूरत की खुसूसियत 2 जावेद जब्बार बमुकाबला फेडरल ऑफ पाकिस्तान PLD 2003, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बमुकाबला चीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान PLD 2002 का एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ बमुकाबला सदर पाकिस्तान PLD 1993 SC 473, 3 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन 1973। CP No. 181 2024.
4 bank account is for the purpose of election expenses, and not for the number of seats the candidate is contesting for in the elections. 1 exclusive bank account for the election expenses to contest for any number of seats, in our view, meets the statutory requirement. For the purpose of requiring such exclusive bank account is to ensure compliance with the provisions of Section 132(3) of the Act, which has prescribed an upper limit of expenses for election to a seat in the Senate, the National Assembly and a Provincial Assembly. If a person contests for election to more than 1 seat, his expenses should not exceed the aggregate of the prescribed expenses for all those seats. The stance taken by the respondents that the candidate must open a separate bank account for every seat he is contesting for is not the intent and purpose of the law and is therefore not legally sustainable. Even otherwise, as the petitioner has withdrawn his petitions filed against the rejection orders of his nomination papers for other seats, this ground has become infructuous. 6. As far as the objection of misdeclaration of the asset in Form B is concerned, the said asset is a 10 mala land in Tehsil Failure, District Mandi Bahardhan. According to the mutation placed before us, the land was purchased on the 30th of November 2023. Whereas the requirement of Section 60(2)(d) is that the statement of assets and liabilities should be as on the preceding 30th day of June, i.e., the 30th of June 2023, and, therefore, the alleged procurement of the asset in question, though denied by the petitioner, has no bearing on the nomination paper filed by the petitioner. Perusal of the Form B submitted by the petitioner clearly shows that the listed assets are as on the 30th of June 2023. Even otherwise, the petitioner has categorically denied that he has purchased the said property, and no summary inquiry has been conducted by the Roe to ascertain the factual position under Section 62(9) of the Act. The rejection order of the Roe was therefore not legally sustainable on this ground. Probably for this reason the Appellate Tribunal, while hearing the appeal against rejection of the nomination paper by the Roe, has discarded the said objection and maintained the Roe's order only on the ground of not holding an exclusive bank account for every seat. The High Court, on the challenge laid by the petitioner, reintroduced the said ground for upholding the Roe's order on both the said 2 grounds. By doing, the Lahore High Court exceeded its jurisdiction, had the petitioner not. CP नंबर 181/2024। 4 बैंक अकाउंट इंतखाबी अखराजात के मकसद के लिए है, न कि इसके लिए उन नशिस्तों की तादाद जिनके लिए उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। 1 किसी भी इंतखाबी अखराजात के लिए खुसूसी बैंक अकाउंट नशिस्तों की तादाद हमारी नज़र में कानूनी ज़रूरत को पूरा करती है कि ये इस तरह के खुसूसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत का मकसद यकीनी बनाना है। एक्ट की दफ़ा 132(3) की दफ़ात की तमील, जिसमें है में एक निशस्त के इंतखाब के लिए अखराजात की एक बालाई हद मुकर्रर की है। सेनेट, कौमी असेंबली और एक सूबाई असेंबली। अगर कोई शख्स 1 से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े, इसके अखराजात नहीं होने चाहिए उन तमाम नशिस्तों के लिए मुकर्ररा अखराजात के मजमूई से ज्यादा। दी जवाब दहिंदगान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उम्मीदवार को एक खोलना जरूरी है। हर इस नशिस्त के लिए अलग बैंक अकाउंट है जिसके लिए वो इंतखाब लड़ रहे हैं, नहीं है। कानून का इरादा और मकसद और इसलिए कानूनी तौर पर पायदार नहीं है। यहाँ तक कि दूसरी सूरत में, जैसा कि दरखास्त गुजार ने दायर करदा अपनी दरखास्ती वापस ले ली है, दीगर नशिस्तों के लिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के अहकामात के खिलाफ ये जमीन बेकार हो गई है। 6. जहाँ तक असासे के गलत ऐलान के एतराज का ताल्लुक है, फॉर्म बी का ताल्लुक है, मज़कूरा असासा तहसील में 10 मुल्ला अराजी है। खालिया, जिला मंडी बहाउद्दीन। रखी गई म्यूटेशन के मुताबिक हमसे पहले जमीन 30 नवंबर 2023 को खरीदी गई थी। सेक्शन 60(2)(d) का तकाजा ये है कि असासों का बयान और वाजिबात जून के पिछले 30वें दिन के तौर पर होने चाहिए, यानी 30 जून 2023, और इसलिए मैं असासा की मुबैना खरीदारी सवाल अगरचे दरखास्त गुजार की तरफ से इनकार किया गया है, इस पर कोई असर नहीं है। दरखास्त गुजार की तरफ से कागजात नामजदगी जुमा कराए गए। फॉर्म बी का जायजा दरखास्त गुजार की तरफ से जुमा कराई गई वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि दर्ज असासे इस तरह है 30 जून 2023 को। यहाँ तक कि दूसरी सूरत में दरखास्त गुजार ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है कि उसने मज़कूरा जायदाद खरीदी है और कोई समरी इंक्वायरी नहीं है। रो की तरफ से हक़ाइक़ पर मबनी पोजीशन का पता लगाने के लिए किया गया एक्ट की दफ़ा 62(9), इसलिए आरओ का रिजेक्शन ऑर्डर नहीं था इस जमीन पर कानूनी तौर पर पायदार। शायद उसी वजह से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील की समाअत की।
आरओ की तरफ से कागजात नामजदगी ने मज़कूरा एतराज को मुस्तरद कर दिया है। आरओ के हुक्म को सिर्फ इस बुनियाद पर बरकरार रखा कि एक नहीं रखा हर सीट के लिए खुसूसी बैंक अकाउंट। हाई कोर्ट पर अर्जी गुजार की जानिब से चैलेंज किया गया, जिस के लिए मज़कूरा बुनियाद दोबारा पेश की गई। मज़कूरा दोनों बुनियादों पर आरओ के हुक्म को बरकरार रखना करने से लाहौर हाई कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। अगर दरखास्त गुजार ना होता। CP No.181 2024. 5 disputed his ownership of the said land. The RO may have directed him to mention the same in his statement of assets. As the second proviso to section 62(9) of the Act specifically prescribes for the ROS that they should not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial nature, and may allow such defect to be remedied forthwith. These provisions show that the law is pro-inclusiveness in the election process. The rejection of the nomination paper of the petitioner on the said ground also is not legally sustainable. 7. For the above reasons, we convert this petition into an appeal and allow the same. The impugned order as well as the orders of the Appellate Tribunal and the RO are set aside. Consequently, the nomination paper of the petitioner filed for the seat of a member of the Punjab Provincial Assembly, PP 32, Gujarat VI, stands accepted. The Election Commission of Pakistan shall ensure that all the necessary actions in the electoral process are duly taken so that the petitioner can contest the election for the said seat on the scheduled date without fail. Islamabad, the 14th of January 2024. Approved for reporting Sadaqat Judge. नंबर 181/2024। 5 मज़कूरा अराज़ी पर उनकी मलकियत का तनाज़ा आरओ ने हिदायत की होगी वो अपने असासों के गोशवारे में उसी का जिक्र करे। दूसरे के तौर पर एक्ट के सेक्शन 62(9) की शर्त खास तौर पर रोज के लिए तजवीज़ करती है कि वो किसी भी बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद न करें। एक्ट जो कि काबिल कदर नौयत का नहीं है और इस तरह के एक्ट की इजाजत दे सकता है, इसका फौरी तदारुक किया जाए। ये दफात जाहिर करती हैं कि कानून हामी है। इंतखाबी अमल में शमूलियत नामजदगी मुस्तरद मज़कूरा ज़मीन पर दरखास्त गुजार का कागज भी कानूनी तौर पर नहीं है। पायदार 7 मुंदरजा बाला वजूहात की बिना पर हम इस दरखास्त को एक में तब्दील करते हैं। अपील करें और उसी की इजाजत दें। गैर मनकूला हुक्म के साथ साथ हिकामात अपीलत ट्रिब्यूनल और आरओ को अलग कर दिया गया है। इसके नतीजे में के एक रुकन की निशस्त के लिए दायर दरखास्त गुजार का कागजात नामजदगी पंजाब सूबाई असेंबली PP 32 गुजरात में मंजूर शुदा मौक़िफ़। दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाएगा। इंतखाबी अमल में कार्रवाइयाँ दुरुस्त तरीके से की जाती हैं ताकि दरखास्त गुजार मुकर्ररा तारीख पर मज़कूरा निशस्त के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, नाकाम रहते हैं बगैर। इस्लामाबाद 14 जनवरी 2024। रिपोर्टिंग के लिए मंजूरी दी गई। सदाकत जज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने एक जजमेंट जो है उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, तो ये फर्दर लर्निंग पर्पज़ है। प्लीज़ इसको जो है ना दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।